A snake charmer, a snake charmer stood playing. A snake charmer stood playing a flute to a snake with coiled itself. It's already the description is already explanation is already given in previous video. So we will start from here. Its head raised in a graceful bend. Graceful means in a charming bend like the neck of a swan. जैसे एक स्वान की नेक होता है ऐसे ही उस चार्मिंग वे में वो अपना फन उठा के अपने फन को हिला रहे थे. While the music stole into its invisible ears. While the music stole into its invisible ears. The ears are invisible. Invisible क्यों? Because no one can notice or no one can see the ears of the snake. So the music or the जो बीन के जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक ऑफ द फ्लूट enters into the ears of the snake. और कैसे एंटर कर रहे थे? Like the gentle rippling, like you can notice here gentle rippling of an invisible waterfall, just as the gentle rippling sound. Rippling, what is the rippling sound? Rippling means wave, as if the wave of an invisible waterfall. जैसे invisible waterfall मतलब suppose in a far distance there is a waterfall, but suppose we cannot see it but we can hear the actual sound, or this sound comes like a wave and enters into our ears. Similarly, in the same way, the flute's music enters into the ears of the snake. ठीक है? The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. So the child went towards the snake charmer. Snake charmer के पास जाता है, but knowing his parents, कि लेकिन उसको पता था, so he was well aware about the fact that his parents had forbidden means warned him. ठीक है? That is a warning. Forbidden is a word that indicates that something that is restricted or मतलब prohibited. It is prohibited for him to hear this type of music. ठीक है? Prohibited for him to hear such a coarse music. Coarse means mean. Here coarse means mean kind of music, और तुम बोल सकते हो बहुत ही mean music, mean kind of music. As the snake charmer played in as the snake charmer played मतलब what the snake charmer was playing. He proceed further. That's why he proceed further. He did not ask his parents to stay there and listen it. Now comes next. There was a roundabout. There was a roundabout in a full swing. Roundabout means the giant's wheel. एक giant's wheel था in full swing, मतलब that is moving in full speed. ठीक है? Man, woman and children carried away in a whirling motion. So man, woman and children. Why man, woman and children all are referred here? Because in order to indicate that मतलब in the on the roundabout each and every people are enjoying there. मतलब there is no age difference, either it is children or man or woman, everyone were enjoying there. Away in a whirling motion मतलब all are carried away in a whirling motion by the roundabout. ठीक है? Shrieked and cried with dizzy laughter. What do you mean by shrieked? Shrieked means a high pitched piercing sound. Suppose suddenly in your class, when suppose you are busy in something doing, and suddenly you notice that a lizard climbed up your leg. That time what you will do? You will make a cry. That cry is actually described as shrieked. मतलब it is too much high pitched sound. Carried with dizzy laughter. Dizzy laughter means the laughing like a मतलब in a mad way they were laughing. Wow, overwhelming laughter. मतलब एकदम मन खुशी से एकदम हंस रहे हैं सब पागलों की तरह. The child watched them intently and then he made a bold request. The child watched them मतलब the child watched those persons who are on roundabout. ठीक है? Intently मतलब जानबूझ के देख रहा था, मतलब जानबूझ के नहीं देख रहा था. Actually he was fascinated, or this scene actually draws his attention. And then he made a bold request. एक bold request करता है. Bold means brave request. मतलब maybe he knew well enough that his request would not be fulfilled, but even that he made a brave request that I want to go on the roundabout, please, father and mother. I want to go on the roundabout. मुझे roundabout में चढ़ना है. ठीक है? There was no reply, but he could not get any reply from his parents. He turned to look his parents. They were not there ahead of him. Ahead of him means in front of him. तो
ही टर्न टू लुक, जैसे ही वो मुड़े और उसके सामने देखेंगे देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके सामने कोई माता पिता नहीं दिख रहा है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड मीन्स राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दे वेर नॉट देयर एंड दे वर नॉट ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। ही लुक्ड बिहाइंड, अब क्या करते हैं, वो पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, बट इवन दैट ही कुड नॉट फाइंड देम बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। अब वहां पे उन सब माता पिता का देयर वाज नो साइन मतलब देयर वाज नो ट्रेस ऑफ देम, कहीं पे नहीं दिख रहा था। ए फुल डीप क्राई, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ए फुल डीप क्राई, व्हाई इट इज कॉल्ड फुल, मतलब द क्राई विच इज डीप, मतलब एक गहरे, मतलब बहुत तेजी से एक अंदर से दिल से एक रोना आ गया उसको। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, एंड ड्राई थ्रोट मीन्स, ड्राई मीन्स हियर यू कैन नोटिस हियर द वर्ड ड्राई, the word dry means, dry indicates as the because of the fear his throat become dry, मतलब डर के मारे गला सूख जाना, और उसी सूखे हुए गले से क्या होता है, एक मतलब डीप क्राई बाहर आते हैं। एंड विथ a sudden jerk, and with a sudden jerk of his body, so why sudden jerk, because now he became, now at that time he became conscious about his actual state, कि what happened there, कि he was lost in the फेयर, मतलब वो मेले में खो गया है, अब उसको पता चल रहा है। तो सडनली ही एक जार्क होते हैं उसके बॉडी में, एंड इमीडिएटली जार्क ऑफ हिज बॉडी एंड रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, और वहां से दौड़ना शुरू कर देता है। क्राइंग इन रियल फियर, रियल फियर मीन्स एक्चुअली ही वॉज टू मच अफ्रेड, मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए। एंड क्राइंग मदर एंड फादर, टीयर्स रोल डाउन, अब उसकी आंखों से क्या होता है, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर सी, मतलब आंखों से पानी बह रहा था। एंड द वाटर इज हॉट, लिटिल बिट हॉट, यू नो द आई ड्रॉप्स आर लिटिल बिट हॉट, इफ यू टच इट देन यू कैन फील इट इज लिटिल बिट हॉट, एंड फियर सी मतलब भयंकर तरीके से गिर रहा था, मतलब लॉट्स ऑफ वाटर्स आर कमिंग आउट फ्रॉम हिज आईज। So his flushed face was convulsed with fear. His flushed face means the face which is pale, मतलब जो रंग गायब हो जाना, जो रेडिश कलर होता है, द नेचुरल रेडिश कलर इज वैनिश्ड नाउ, इट टोटली ट्रांसफॉर्म इनटू ए पेल फेस, मतलब रंग बेरंग हो जाना डर के मारे, एक व्हाइटनेस आ जाता है। वाज कॉन्वल्स्ड विथ फियर, दैट इज टोटली कवर्ड, और मतलब और क्या इसमें, दैट इज टोटली कवर्ड बाय फियर, और यू कैन से कॉम्प्रेस्ड नहीं बोलूंगा यहाँ पे, तुम यू कैन टेक इट एज कवर्ड विथ फियर, हिज फेस टोटली कवर्ड विथ फियर। पैनिक स्ट्राइकन मीन्स, पैनिक कब हो जाता है इंसान, जब बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम काइंड ऑफ फियर। सो ही ऑल्सो बिकम, ही फेल्ट एक्सट्रीम काइंड ऑफ फियर, ठीक है, सो बिकम पैनिक स्ट्राइकन। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिदर एंड दिदर मीन्स हियर एंड देयर हियर हिदर एंड दिदर मीन्स, हिदर एंड दिदर मीन्स हियर एंड देयर, तो वो क्या करते हैं, एक साइड में पहले दौड़ते हैं, देन अदर साइड, देन हियर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में दौड़ते रहते हैं। नोइंग नॉट वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है उसको पता नहीं है, मतलब विदाउट एनी डेस्टिनेशन। मदर फादर ही वेल्ड इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स क्राइंग, बट दिस क्राइंग इज व्हेन पीपल फील टू मच पेन इनसाइड देयर हार्ट, बहुत ज़्यादा हार्ट पे, जब दिल पे बहुत ज़्यादा मतलब चोट लगता है, तभी ये रोना आता है। तो इसी तरह से दिस टाइम बिकॉज द बॉय वॉज टू मच पैनिक स्ट्राइकन, और बॉय वॉज टू मच अफ्रेड, दैट्स वाई ही वेल्ड his yellow turban. Now comes to the next stanza. If it helps you, please subscribe my channel.